કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલીમાં છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ જયંતિ ઉત્સવ સમિતિએ વીર શિવાજી મહારાજની 396મી જન્મજયંતિની ખૂબ જ ધામધૂમ અને ઉત્સાહ સાથે ઉજવણી કરી। આ શુભ પ્રસંગે સમિતિએ એક ભવ્ય અને સુંદર શોભાયાત્રાનું આયોજન કર્યું હતું। શોભાયાત્રાનું ઉદ્ઘાટન દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવ ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ મહેશભાઈ અગરિયાએ નાળિયેર ફોડીને કર્યું હતું। આ પ્રસંગે ખાસ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ ભાજપ મહાસચિવ સુનિલ પાટીલ, સિલવાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલના પ્રમુખ સોમનાથ દેવરે, દાદરા નગર હવેલી જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ નિશા બબર, ઉદય સોનાવણે, પ્રવીણ સોનાવણે અને સુનિલ મહાજન, જયંતિ ઉત્સવ સમિતિના સભ્યો તેમજ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓ હાજર રહ્યા હતા। ભવ્ય શોભાયાત્રા અમલીના છત્રપતિ શિવાજી રાજે ચોકથી શરૂ થઈ હતી, જે સિલવાસાના મુખ્ય રસ્તાઓમાંથી પસાર થઈને નરોલી 4 રસ્તા, કિલવાની નાકા અને ઝાંડા ચોકમાંથી પસાર થઈને અમલીના છત્રપતિ શિવાજી રાજે ચોક પર સમાપ્ત થઈ હતી। આ દરમિયાન વિવિધ આકર્ષક ઝાંખીઓ અને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની ભવ્ય ઝાંખી સાથે નીકળેલી શોભાયાત્રાનું શિવજીના ભક્તોએ ઉત્સાહભેર સ્વાગત કર્યું હતું। આ પ્રસંગે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ જયંતિ ઉત્સવ સમિતિના અધિકારીઓએ આ ભવ્ય શોભાયાત્રામાં ભાગ લઈને કાર્યક્રમને સફળ બનાવનારા તમામ સમુદાયના સભ્યોનો આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો હતો। આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં આયોજન સમિતિના તમામ સભ્યોનું વિશેષ યોગદાન હતું। એ જાણવું જોઈએ કે આ જયંતિની ઉજવણી દેશભક્તિ અને ગૌરવના પ્રતીક તરીકે આનંદથી કરવામાં આવી હતી, જે લોકોને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના દૂરદેશી નેતૃત્વ અને સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસાની યાદ અપાવે છે। આ અંગેની વધુ માહિતી માટે જોતા રહો ભારત टाइम्स न्यूज। इसके लिए तो मैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो जयंती के उत्सव की जो कमेटी है, उस कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इतनी सारी संख्या में लोग आज जुड़े हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी वो प्रखर हिंदूवादी थे, तो हमें गर्व है इस बात का। और आज जितनी संख्या में लोग जुड़े हैं, इसके लिए मैं उन लोगों का भी बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा। आज इस रैली में लाखों के तादाद में लोग जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रदेशवासियों, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा, सब मिलके हम जो भी त्योहार मिलके मनाएंगे। और जिस तरह से आज इस समिति ने जो कार्य किया है लोगों को जोड़ने का, इसके लिए मैं दिल से फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती उत्सव समिति द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, और आज आप देख सकते हो पूरा सिलवासा भगवामय हो चुका है। और साथ ही हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेश भाई आगरिया जी भी यहाँ पर उपस्थित थे। बड़ी संख्या में यहाँ पर जनप्रतिनिधि और लोगों ने भाग लिया, और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर शोभा यात्रा में सभी लोग जुड़े। मैं सभी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। कितने साल से ये शोभा यात्रा आप निकाल रहे हैं? पिछले 16 वर्षों से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और आप देख सकते हो कि हजारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म जयंती, इस वजह से मैं पूरे दादरा नगर हवेली दमन निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये रैली का हमारा 16वां साल है, बहुत अच्छी तरह से चलता है। वो तारक बाहर गाँव से वाद्य आते हैं, जो भी है सब मिल के चलते हैं। आज इतनी बड़ी रैली निकली है जिसमें सभी प्रांत के लोग शामिल हुए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, सभी प्रांत के लोग हैं, सब अपने भाईचारे वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई जाति धर्म नहीं है, सब जात वाले अपने साथ जुड़े रहते हैं। सब शांतिमय वातावरण से अपना रैली चलता है। शिवाजी महाराज अपना कृपा सभी पे बरसाए रखे, उसके लिए तो सब क्या कहना चाहेंगे? देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे विश्व के अंदर नेशनल हीरो थे, दादरा नगर हवेली पे दमन पे बहुत सारी कृपा है उनकी।